Dear students, today we'll discuss about transfer learning, and this is considered as the most important part of one of the most important parts of our deep learning. So here we'll go through one practical as well as we'll try to clear the concept that why do we need transfer learning. Okay, so let me share the screen for you. Now imagine you already know how to drive a car. Okay, कार चलाना आपको आते हैं पहले से. Now you want to learn to drive a bus, right? Then you don't need to start your learning from the zero because you already know how to drive a car because you already know steering, steering and then brakes and accelerator and traffic rules. These things you already know. You only learn what is exactly different in this case. That is bus, how to particularly drive a bus. This is known as transfer learning. Okay. So what you got? That some knowledge we already have. That knowledge we don't need to try from the zero. We can use that knowledge to go for learning anew. Suppose a model trained on 1 million images already knows, right? Like edges, colors, shapes, textures, objects. Now, instead of training again, we need to reuse that knowledge of our own data set that is already been used, right? Yes. Thank you, Dave. So now what we'll do, this knowledge we have, then like if I go through the means closer. This is the ImageNet dataset, say 1 million images. Some pre-trained models I'm going to consider here is MobileNet. I'll tell you about MobileNet, what is that. Then we need to fine tune that model for our dataset, say what is the topic, the tasks for today, and then we can use, right? So much of time save. So हमें आता है पहले से उसको हम फिर से वापस शुरू से स्टार्ट नहीं करेंगे जो आते हैं वो हम यूज करेंगे समझ में आ रहा है so that why do you use transfer learning because without transfer learning to collect again 1 lakh images train for 3 days high CPU cost right तो इतना लगे आप ट्रांसफर लर्निंग नहीं होने से ये फिर से दोबारा करना पड़ता हमें 1 लाख इमेज को फिर से कलेक्ट करो ट्रेन करो 3 दिन तक जीपीयू कॉस्ट फिर से उठाना पड़ता है आपको now, with transfer learning, download the pre-trained model. Okay. Just you need to train the model for a few minutes. And also you will get excellent accuracy. So what I mean to say, transfer learning reduces training time and the need for very large data sets while improving the efficiency. Got it? Now, some cases like positive and negative transfer learning. ट्रांसफर लर्निंग में दो है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव लर्निंग अब पॉजिटिव ट्रांसफर मीन्स ओल्ड नॉलेज हेल्प्स जो पुराना नॉलेज है वो हमें हेल्प कर रहे हैं लाइक कार ड्राइविंग से बस ड्राइविंग में आया आप कार ड्राइविंग टू बस ड्राइविंग लर्निंग बिकम्स इजियर ओके ये है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग नाउ negative transfer learning say all knowledge hurts only suppose car driving now flying an airplane now these two are two completely different skills so performance will be decreasing this is called negative transfer learning क्या मुझे आप दो एग्जांपल दे सकते हो एक पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग के लिए और एक नेगेटिव ट्रांसफर लर्निंग के लिए आई वुड लव टू सी दैट love to see your example okay don't forget so many models are there, popular pre-trained models. You kindly note down them. We frequently use them for our different tasks, like mobile net B2. This is mobile applications. BGG16 for image classification. ResNet 50, deep computer vision. Efficient net for high accuracy. Inception VT for image recognition. Exception for medical images. And NUSNet for large-scale vision tasks.
Okay, these are some popular pre-trained models. Okay, now let's come to today's talks. Cat versus dog image classifier using ट्रांसफर लर्निंग। हमारा जो आज काम होगा, हम एक मॉडल ट्रेन करेंगे। वो एक इमेज क्लासिफायर होगा जो कैट एंड डॉग को क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। इसके लिए हम यूज करेंगे मोबाइल नेट वर्जन 2। वर्क फ्लो इसका कैसा होगा, लेट मी टेल यू। कैट एंड डॉग इमेजेस, प्री ट्रेन मोबाइल नेट V2, मतलब हम ट्रांसफर लर्निंग यूज करेंगे। जो पहले का मॉडल है उसको फ्रीज एग्जिस्टिंग लेयर्स को हम फ्रीज करेंगे, रोक देंगे उसको। ट्रेन न्यू डेंस लेयर, अपना नया डेंस लेयर को हम ट्रेन करेंगे। देन इट विल अल्टीमेटली कैन रिकॉग्नाइज और क्लासिफाई कैट और डॉग। ठीक है। नाउ before going to these tasks directly, let's just try with a real life example. A person who already knows how to ride a bicycle can usually ride a motorcycle uh, much faster than someone who has no idea riding experience। जो मैंने अभी आप लोगों को बोला कि जिसके पास ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस यूज करके वो इजीली चीजों को टैकल कर सकते हैं, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट को एआई में हम बोलते हैं आपका ट्रांसफर लर्निंग। अब आई थिंक कोई डाउट नहीं रहा आप लोगों का। So instead of training a neural network from the very beginning, an already trained model is used, and the model has previously learned useful image features like edges, shapes, textures, patterns, and these learned features are transferred to solve a new classification problem with much less tiny training time and data। ठीक है। This is known as transfer learning। So overall workflow क्या है, cat versus dog images, we will use image processing, and then uh, retain mobile net version 2, already trained on ImageNet, freeze existing knowledge, add new classification layers, and then train only the new layers, and then get a dog predictions। तो इसमें हमें क्या लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना होगा। सो first, we have to install, or you can say reinstall the TensorFlow with TensorFlow data sets, Matplotlib, NumPy. Because TensorFlow we will use to build and train deep learning model. TensorFlow dataset TFDS automatically downloads and prepares the dataset. Matplotlib for displaying images and plotting graphs, and NumPy for numerical। ये सब तो आप लोगों का पूरा याद रह गया होगा, हमने बहुत बार यूज किया है, राइट। आप इसको हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट टेंसरफ्लो एसटीएफ। ठीक है। याद रखना ये टेंसरफ्लो क्या है, गूगल का है। यहाँ पे हम जो भी यूज अभी कर रहे हैं ना, गूगल का ही कर रहे हैं, सरप्राइजिंगली, राइट। तो टेंसरफ्लो गूगल्स ओपन सोर्स डीप लर्निंग फ्रेमवर्क, वी यूज इट टू बिल्ड न्यूरल नेटवर्क्स, राइट। इंपोर्ट टेंसरफ्लो डेटासेट एस टी एफ डी एस। आप टेंसरफ्लो हमें कुछ डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं, हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। इंपोर्ट TensorFlow dataset TFDS। Instead of downloading datasets manually, we can use this to download and prepare dataset automatically। Then import Matplotlib, PyPlot, इससे हम ग्राफ के लिए यूज करते हैं। NumPy, you all know why। Now we can print this TFDS version, so it will display the installed version of the TensorFlow dataset, right। Now we can see that whether load function work or not, or that has ATR TFDS load। ये इससे क्या होगा, ये एट्रीब्यूट है या नहीं, लोड है या नहीं, समझ में आ जाएगा। देन डेटासेट को डाउनलोड किया, डेटासेट का ट्रेन, डेटासेट डेट टेस्ट कॉमा इन्फो TFDS लोड। इससे क्या होगा, दिस कमांड डाउनलोड्स द कैट versus dogs dataset directly from this TensorFlow dataset। No manual downloading or folder organization is required। ना ये जो 80% ट्रेनिंग स्प्लिट किया हो, इससे क्या होगा, ट्रेनिंग डाटा सेट 80% हो जाएगा, आपका जो टेस्टिंग डाटा सेट कितना आ जाएगा, आपको 20% हो जाएगा। So this training data set is used to learn patterns, while the testing data set evaluates the model's performance। Clear? So as supervised true returns the data as image, comma, level।
इंस्टेड ऑफ दिस लाइन। तो इससे आपको आउटपुट लेवल के थ्रू मिल जाएगा। ओके, with info to means it will return additional information like number of classes, class names, total number of images, dataset metadata. Now display the dataset information, info.features, level names, output get doc। समझ में आ जाएगा क्या क्या है इसमें, क्लासेस। सैंपल इमेज आप ले सकते हो, dataset train take 5, return the first 5 images from the training dataset, plot.imshow image displays the selected image, plot.title displays the corresponding class level get और doc। ठीक है, प्री प्रोसेसिंग हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सपोज इमेज साइज 2224। Why is the image size set to 224 cross 224? Because जो हम यूज कर रहे हैं मोबाइल नेट version 2, net v2 expects every image to have the dimension 224 cross 224 cross 3। इसलिए हमें इमेज को 22 cross 224 cross 2224 में ट्रांसफर करना पड़ता है, राइट। सो all images must be resized before training। Okay, then tf.image.resize, just a minute। तो ओरिजिनल इमेज सपोज 500 क्रॉस 600 था, रीसाइज करके हमने इसको क्या बना दिया, 224 क्रॉस 224। क्यों? क्योंकि जो आपका मोबाइल नेट V2 है वो सिर्फ 224 क्रॉस 224 क्रॉस 3 यही पार्टिकुलर डायमेंशन को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। उसके बाद हमने नॉर्मलाइज किया। नॉर्मलाइज पिक्सल वैल्यू इमेज डिवाइडेड बाय 255, ओरिजिनल पिक्सल वैल्यूज फ्रॉम 0 to 255। नाउ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, 0 to 1। सो इट व्हाई हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन जो है, नॉर्मलाइजेशन ऑलवेज इंप्रूव्स द ट्रेनिंग स्पीड्स एंड मॉडल परफॉर्मेंस, इसलिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। उसके बाद बैचेस क्रिएट किया। यहाँ पे हमने हमने 32 का बैच लिया है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है हम 32 इमेज एक ग्रुप में लिया है। So instead of processing all images simultaneously, the model learns from group of 32 images। 32 images, forward propagation, calculate loss, backward propagation, just a minute, clear it। Then update the weight, next 32 images। तो एक एक बार में आपका 32, एक बैच में 32 images लेके हम चल रहे हैं। Shuffle 1000 means randomly rearrange the images before training without shuffling all cat images may appear first followed by all dog images, so that can introduce bias into learning process। इसलिए हमने shuffle कर दिया कि कुछ भी आ सकता है, कैट या तो डॉग, कोई भी आ सकता है इसमें। then prefetch this loads the next batch of images while the CPU processes the current batch, so improving the training efficiency। prefetch क्या करते हैं, जो नेक्स्ट बैच ऑफ इमेजेस है, अभी जो 32 इमेजेस हो रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट 32 बैच है उसको लोड करते हैं, ठीक है, ताकि रेडी रहे, ट्रेनिंग स्पीड बढ़ जाए इससे, राइट। ट्रेनिंग का एफिशिएंसी इससे बढ़ते हैं। देन हम क्या किया, मेन जो ट्रांसफर लर्निंग मॉडल है, बेस मॉडल, उसको लोड द मोबाइल नेट टू V2। तो बेस मॉडल इज असाइंड मोबाइल नेट टू V2। नाउ ट्रांसफर लर्निंग बिगिंस हियर। Mobile net V2 is not trained in this project, right? It is already been trained by Google using ImageNet dataset। या जो मोबाइल नेट टू V2 है, इसको गूगल ने ट्रेन किया था इमेज नेट डेटासेट के जरिए, जिसमें 1.2 मिलियन इमेजेस हैं। कितना इमेजेस हैं, 1.2 मिलियन। तो एंड फ्रॉम 1000 डिफरेंट कैटेगरीज। यहाँ पे तो हमने सिर्फ 2 क्लासेस लिया है, राइट, कैट एंड डॉग। तो वन इमेज नेट में तो आपका क्या है, 1.2 मिलियन इमेजेस, 1000 डिफरेंट कैटेगरीज का है। सो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि which ImageNet is the most important line in transfer learning because it loads the pre-trained weights learned from the ImageNet dataset। तो ये जो weights है, weight बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका डीप लर्निंग में मैक्सिमम आप देख सकते हो weight अपडेशन में ही काम होता है। तो ये weights हमने ले लिया ImageNet dataset में, जो प्री ट्रेन वेट्स है, ठीक है, उसको लोड कर लिया। तो इससे क्या होगा, द मॉडल ऑलरेडी अंडरस्टैंड द फीचर्स लाइक एजेस, कॉर्नर, शेप्स, टेक्सचर्स, आईज, फेस, animal, trees, vehicles। So instead of learning the features again, the existing knowledge is reused। Then include top false screenshot। The original mobile net
V2 model predicts 1000 ImageNet classes. Now here हमारे पास क्या है सिर्फ दो cat and dog classification required. So original classifier is removed. So include dog falses means original classifier is removed. So a new classifier will be later added later. क्योंकि वो जो ImageNet class में 1000 classes था, right? Okay, just clear it. Okay. Now freeze the pre-trained model. ये तो करना जरूरी है हमें। तो जो प्री ट्रेन मॉडल मोबाइल नेट V2 इसको फॉल्स किया हमने प्री बेस मॉडल डॉट ट्रेनिंग able is equal to false. Now transfer learning continues here. This instruction prevents the pre-trained model net V2 which from being modified. The previously learned knowledge is preserved and only the new added classification layers will be trained. Now we will add new classification layer here. Say dance 128. तो हमने एक layer dance 128. So 128 neurons. So it learns features specific to the cat's dog dataset. Okay, we are using here. Dropout 0.3 means randomly disabled 30% of neurons during the training. बोला था मैंने आप लोगों को ओवरफिटिंग के लिए करते हैं हम ओवरफिटिंग को स्टॉप करने के लिए हम ड्रॉप आउट यूज करते हैं यहाँ पे 0.3 मीन्स 30% न्यूरॉन को रैंडमली डिसेबल कर रहे हैं हम okay this will improve the this will stop the overfitting and improves the generalization okay then Schwann's activation sigmoid so it produces a probability between 0 and 1 okay let me clear it so 0 means cat 1 means a dog since only two classes exist so sigmoid activation function is appropriate two classes ही है इसमें तो हमने sigmoid activation function यूज किया तो कहाँ हमने यूज किया ट्रांसफर लर्निंग मैंने अभी बोला वेट असाइन इमेज नेट तो इमेज नेट के दौरान जो भी ट्रेन वेट अपडेट हुआ था वो पूरा हम अभी यहाँ पे असाइन कर लिया इट विल लोड द प्री ट्रेन मोबाइल नेट V2 मॉडल एंड बेस मॉडल ट्रेनेबल फॉल्स प्रिजर्व्स द knowledge learn knowledge while training only the new added layer. So transfer learning occurs only two steps, only in two steps, which is assigned to ImageNet. It will load the pre-trained model mobile net V2 and base model trainable is equal to false means it will preserve the learned model knowledge while training only the newly added layers. So everything else involves standard deep learning operations such as your pre-processing, training, evaluation, and prediction. Then we'll compile the model as it is like with optimizer Adam because Adam automatically updates the neural network weights during the training and we'll use loss function as binary loss entropy because it is there are only two output classes cat and dogs. Then we train the model.fit. During training only the new added dance and dropout layers are अपडेटेड हमने दो ही ऐड किया था यही अपडेट होगा सिर्फ द मोबाइल नेट V2 फीचर एक्सेस रिमेन अनचेंज्ड ये याद रखना ठीक है then visualize the accuracy and loss a well trained model generally shows accuracy increasing and loss decreasing right accuracy हमेशा increase होना चाहिए loss decrease होना चाहिए if the training accuracy only continues increasing while the validation accuracy decreases, the model is likely overfitting. ये पूरा आप लोग underline करके रख दो अगर training accuracy ठीक है बढ़ रहा है but validation accuracy घट रहा है आपका decreases then this means the model is likely in undergoing through overfitting problem. Then evaluate the model.evaluate. It measures the model performance on unseen testing images. Now predict a new image, suppose upload the image, then image will be resized to 2 to 4 cross 2 to 4. Normalize the pixel values, convert tensor, predict cat or deck and display the score. तो यहाँ पे जो हमने मोबाइल नेट V2 यूज किया है मैंने बोला था ना बताऊंगा कि क्या है एग्जैक्टली सो ये मोबाइल नेट V2 is a lightweight and an efficient convolutional neural network developed by Google for image classification तक तो मोबाइल नेट V2 एक्चुअली क्या है एक CNN है जो हमने लास्ट इंटर्नशिप क्लास में डिस्कस किया था ये गूगल ने ट्रेन किया डेवलप किया था इमेज क्लासिफिकेशन टास्क के लिए इट इज फ्री टेन on ImageNet dataset containing 1.2 million images across 1000 object categories because it has already learned important visual features like edges, shapes,
text search, object. So it can be used for new image classification tasks using transfer learning, right? And significantly, it reduces training time and improve performance. Got it? Just clear it. की फीचर्स यही है कि ये लाइट वेट एंड कॉम्पिटिशनली एफिशिएंट है, इमेज नेट डाटा सेट के ऊपर प्रीटेन है, इनपुट साइज 224 क्रॉस 224 क्रॉस 3 है, एंड इट यूजेस डेप्थ वाइज सेपरेबल कन्वोल्यूशन टू रिड्यूस द computational cost. We use it because it reduces training time, it requires fewer training images, provides high image classification accuracy, and suitable for mobile and embedded device, easy to adopt to new image classification tasks, right? हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, बहुत ही जगह में हम यूज कर सकते, लाइक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, प्लान डिजीज डिटेक्शन, मेडिकल इमेज एनालिसिस, एनिमल क्लासिफिकेशन, गूगल लेंस, ऑटोमेटिक। गूगल लेंस तो आप लोग जानते ही हो ना, आप लोग स्कैन करते हो मोबाइल से, गूगल लेंस से, और वो डिटेक्ट करके दे देते हैं ये क्या है एग्जैक्टली, राइट? स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम, many places we use it, it has a wide uses. ओके, सो कंप्लीट अगर वर्क फ्लो हम देखेंगे, डाटा सेट, उसके बाद 224 क्रॉस 224 क्रॉस 3 मैंने रिसाइज करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करेंगे, लोड मोबाइल नेट V2 प्रीटेन ऑन इमेज नेट, देन ट्रांसफर लर्निंग होगा आपका, विच इज असाइन इमेज नेट, फ्रीज प्रीटेन मॉडल, राइट? एड ए न्यू क्लासिफिकेशन लेयर, कंपाइल मॉडल, ट्रेन मॉडल, राइट? जस्ट अ मिनट, एंड देन प्रेडिक्ट कैट और डॉग। समझ में आ गया आपका? तो अभी मैं आपको ये इसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। ये टाइम लेते हैं, इसलिए मैं लास्ट टाइम के जैसे नहीं करूँगा। सो ऑलरेडी हमने क्या किया, इसको इंस्टॉल किया। फर्स्ट सी आई स्टार्टेड विद दिस पिप इंस्टॉल अपग्रेड। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। अपग्रेड फोर्स री इंस्टॉल ट्रांसफॉर्म TensorFlow datasets matplotlib numpy, ये हो गया। Then import TensorFlow as tf, import TensorFlow dataset as tfds, import matplotlib.pyplot as plot, import numpy as np। ठीक है, उसके बाद tfds का प्रिंट वर्जन, जो वर्जन है उसको प्रिंट करके देखा, लोड एट्रीब्यूट है या नहीं, हैज atr tfds कॉमा लोड। तो देख सकते हो tfds का वर्जन 4.9.10 लोड एट्रीब्यूट है। उसके बाद हमने डाटा सेट को लोड किया। ये टेंसर फ्लो का ही डाटा सेट यूज कर रहे हैं, इसको अलग से डाउनलोड करना नहीं पड़ रहा है। तो डाटा सेट ट्रेन कॉमा डाटा सेट टेस्ट कॉमा इन्फो tfds लोड कैट्स वर्सेस डॉग्स, ये नाम है इस डाटा सेट का, कैट्स वर्सेस डॉग। स्प्लिट किया हमने, ट्रेन में 80% हमने रखा है, ठीक है। तो सो एज सुपरवाइज ट्रू, हाँ मैं क्लास सही होगा, क्लास लेवल विथ इंफॉर्मेशन ट्रू, ये ऑफकोर्स इंफॉर्मेशन चाहिए, फ्री इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हो ये करने के बाद हमारा पूरा डाटा लोड हो जाएगा। ये आपका 80% ट्रेनिंग एंड 20% टेस्टिंग में स्प्लिट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्लासेस, इन्फो फीचर्स लेवल नाम क्लासेस तो 2 है यहाँ पे, क्लास नेम कैट एंड डॉग है, ठीक है। इन्फो डॉट फीचर्स लेवल डॉट नेम्स, प्रिंट ट्रेनिंग सैंपल्स, इन्फो डॉट स्प्लिट्स, नाम एग्जाम्पल 2 3 2 6 2, इतना है हमारा ट्रेनिंग सैंपल। उसके बाद हमने दो क्या किया, रैंडमली आपको डिस्प्ले करके दे दिया। तो लेवल इन डाटा सेट ट्रेन टेक्स्ट 5, लेवल लेवल डॉट नम 5, प्लॉट सब प्लॉट 1 5 लेवल वेल प्लस 1 इन सो इन एस नम 5, प्लॉट टाइटल इमेज फीचर्स लेवल नेम्स लेवल वेल प्लॉट एक्सिस ऑफ लोचो। तो ये दोनों कैट एंड डॉग का इमेज रैंडमली आपको मिल चुका है। इमेज साइज 224, प्री प्रोसेस इमेज कॉमा लेवल, इमेज रिसाइज इमेज इमेज साइज 224 उसके बाद टी एफ डॉट कास्ट इमेज TF फ्लोट 32 डिवाइडेड बाई 255 नॉर्मलाइज। उसके बाद रिटर्न इमेज कॉमा लेवल। ट्रेन डाटा सेट ट्रेन प्री प्रोसेस, ओके। नाम पैरेलल कॉल्स TF डाटा ऑटो ट्यून, देन टेस्ट प्री प्रोसेस नम पैरेलल कॉल्स TF डाटा ऑटो ट्यून। तो इससे बैच साइज हमने डिफाइन किया 32, ठीक है। और इस बैच साइज के लिए आपका ट्रेन डाटा सेट एंड टेस्ट डाटा सेट एंड देन बेस मॉडल हमने अभी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, tf.keras.applications.mobilenet v2 infosave 224 इंक्लूड टॉप फॉल्स, ओके। क्योंकि हमें उनका तो 1000 क्लासेस है, हमारे 2 हैं, तो इसको यूज नहीं करेंगे। सिर्फ हमें वेट चाहिए, तो वेट इज असाइन इमेज नेट, ओके। इसे पूरा डाउनलोड हो जाएगा वो मॉडल, बेस मॉडल डॉट ट्रेनेबल फॉल्स, ताकि हम ये जो मोबाइल नेट V2 है
उसमें जो ट्रेन चीजें हैं उसमें कुछ अपडेट ना हो। मॉडल डॉट टी एफ केरास सिक्वेंशियल, तो ये हमारी तरफ से हमने ऐड किया। एवरेज पुलिंग 2D, डेंस 128, एक्टिवेशन रिलूफ, ड्रॉप आउट 0.3, एंड लास्ट में आपको आउटपुट चाहिए 0 और 1 में ही, राइट। 1 एक्टिवेशन सिग्मोइड, ठीक है। डाम ऑप्टिमाइजर, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी एंड एक्यूरेसी। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी क्योंकि यहाँ पे दो ही क्लास है। एक्यूरेसी हमने लिया मैट्रिक्स। तो मॉडल में हमने डाटा को फीड किया, ट्रेन डाटा, वैलिडेशन डाटा, इसे असाइन टेस्ट डाटा सेट। ये बॉक्स 5 बॉक्स के लिए इतना टाइम लगा आपका। उसके बाद हमने फिगर ट्रेनिंग वर्सेस वैलिडेशन एक्यूरेसी के लिए डिस्प्ले किया। आप देख सकते हो ये जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, और वैलिडेशन एक्यूरेसी एक समय के बाद खत के पीछे थोड़ा ही बढ़ा है। तो इससे थोड़ा आपको प्रेडिक्शन करने में आसान होगा कि ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पे। आप ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉस भी आप देख सकते हो। ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉस यू कैन सी इंक्रीजिंग, राइट। देन एक्यूरेसी 0.98667, तो 99 एक्यूरेसी मिल रहा है हमें। तो हमने एक अपनी तरफ से इमेज इनपुट करेंगे यहाँ पे। सो आई एम इंपुटिंग वन इमेज, से दिस इज द इमेज। ओके, इमेज अपलोडेड। ये अपलोड किया था हमने, हमें पता है वी एज ए ह्यूमन बीइंग नो दिस इज अ कैट। सो मॉडल इसको क्या करेंगे देखते हैं। पहले इसको नॉर्मलाइज किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रेडिक्शन, देन प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.5 प्रेडिक्शन। आप देख सकते हो 0.5 से कम है तो ये कैट प्रेडिक्ट कर रहा है, और कॉन्फिडेंस 100%। ऑब्वियसली ये कैट के लिए कैट प्रेडिक्ट कर रहा है, तो इसका एक्यूरेसी भी आपको सही मिल रहा है, राइट। लेट्स टेक अनदर इमेज। आई एम टेकिंग से दिस इमेज, लेट्स सी। और नॉर्मलाइज इट। सो ये डॉग प्रेडिक्शन करके दे दिया है मॉडल ने, डॉग, एंड वी नो दैट दिस इज करेक्ट, ठीक है। सो लेट मी टेक वन मोर इमेज। ये डॉग प्रेडिक्ट कर रहा है, सो दिस इज करेक्ट। सो आवर trained model is working perfectly, but our model is a transfer learning based one, because that there we are using mobile net v2, which is already trained by Google for the instant data set. So I hope that this part is very much clear to you. आज आप लोग यही करिएगा and show me your output for different images in your group. And आपको apart from dog and cat, you take on more images and let me see that what you output you got it, right. And also you try to find out what these two graphs tells to you about the training and validation loss and overfitting and underfitting problem. Okay, that's it for today. Thank you.